It's one of India's holiest cities, one of the 4 sacred places where the Kumbh Mela takes place. India's second longest river, the Godavari, originates here. It's here where Hindus immerse ashes and pray for the dead. It's also home to Asia's biggest onion market and produces 90% of India's wines. For 75 days, the Sanjeevani ki Gaadi on the road, travelling to remote villages and covering over 5,000 kilometers. Network 18 and Federal Bank's vaccine awareness campaign against COVID-19, Sanjeevani, a shot of life, now in the district of Nashik in Maharashtra. The monsoon is relentless in Nashik district. The Sahyadri is enveloped in thick fog. And then suddenly visibility drops to zero. People, animals are barely visible, but the landscape is breathtakingly beautiful. The Western Ghats, lush green, stunning and peaceful. Tharngaon, 50 kilometers south of Nashik city. Life back to near normal in this quiet village. Schools have restarted and the markets running once again. The perfect time for the Sanjeevani team to hit the ground to spread vaccine awareness. Our social workers requesting citizens to be vigilant and to follow COVID-appropriate behavior. Registration details for vaccines are also taken from vaccine-eager individuals. And most importantly, the door-to-door drive allowing people to ask questions and clear doubts to dispel myths and hesitancy. पहिला डोस घेतलाय आणि कोरोना झाला तरी तो कमी प्रमाणात राहतो आणि जगू शकतो माणूस. काळजी घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्या लसीकरण केंद्रामध्ये At the village square, Sanjeevani social workers are creating mass vaccine awareness with a larger group of people. Pamphlets with the latest information on vaccines and the vaccination process were also shared with villagers. A coronavirus mascot is a constant reminder that the pandemic is not over and it's imperative to get vaccinated. And reaching their hearts through the Sanjeevani anthem. Actor Sonu Sood has been urging the public to get vaccinated and to be safe. हमारे गांव में संजीवनी कैंपेन के लोग आए और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को समझाया. उनकी वजह से हमको कोरोना वैक्सीनेशन करवाना बहुत आसान हो गया. और हम जो फील्ड में काम करते हैं, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी टीम, इस संजीवनी कैंपेन के लोग आने से हमको बहुत सा फायदा और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हो गए. Tharngaon saw 18 deaths in the second wave. The good news is that nearly 60% of the village has taken their first dose. But many more need to be convinced. संजीवनी कैंपेन के लोग जो आप हमारे यहाँ आए, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ ठाकर और कोली समाज जो टीकाकरण के लिए एग्री नहीं थे, वो अभी आपकी वजह से एग्री हो गए हैं. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो समझाया उनको, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया. आपका मैं हमारे गांव की तरफ से शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. Over 4 lakh people got infected with COVID-19 in Nashik. Until date, 8,500 people have died of the deadly disease, the 5th highest district in Maharashtra. It also has a worrying case fatality ratio of 2.2%. And death also visited the Sadgir family. Just a few months ago, it was a happy household. Their home is a few kilometers away from Jategaon village. The family was unscathed during the first wave. Then in late March this year, Navnath's mother went for a wedding. हमारे मम्मी शादी में जाके आए, उनको कोरोना हो गया. उससे वजह से हमारे 7 लोगों को कोरोना हो गया. Out of 11 family members, 7 got infected with COVID-19, including her husband Eknath, who was serious but survived. हमारे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए. वो 15 दिन में
डेथ हो गई। हमारे भाई को एडमिट किया, वो 35 दिन में था हॉस्पिटल में, वो भी डेथ हो गया। 2 deaths in 2 weeks to COVID-19 in a single family. Yerabai was 55 years old. Her elder son Dhyaneshwar was just 33, leaving behind a widow and 2 children. Moreover, the hospital bills have left them with a huge debt. हमारे भाई के टोटल खर्चा 15 लाख रुपया गया। सब दवाई बाहर से लेके गए थे, रेमडेसिविर, ट्रोसली और 2 प्लाज्मा किया था, उससे कुछ फ़र्क ही पड़ा नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो गया नहीं। बाद में उनको बोल दिया कि हमको तुम्हारे भाई डेथ हो गए। माझ्या सासूबाई पण गेल्या आणि माझे पती पण गेले। हे असं काही होऊ नये, पण हे असं घडले, हे असं कधीच घडू नये, पण हे असं होतंय। हे लसीकरण निघाले ना, हे सगळ्यांना पण घ्यावा असं माझं हे वाटतंय। हे संकट माझ्यावर आले ना, असं कोणाला पण येऊ नये। माझे लहान लहान लेकरे आणि ते कसे सांभाळायचे आणि कसं शिकवायचं, हे संकट लई मोठं आले, पण आता ते कसं तरी दूर करायला लागल। हे माझ्या संकट आले ना, असं कोणालाच येऊ नये, एवढीच माझी इच्छा आहे। In the same village a few kilometers away happened a similar story of grief and loneliness. Devaki and Vijay were married too old to work. Her only option is to toil as a farm laborer. त्या टायमाला लसच नव्हती, 50-60च्या पुढे लस होती त्या टायमाला। 3 deaths in the same village reveal a common theme. None of them had got vaccinated. देवकी, आपने क्या टीका लिया है, वैक्सीन? नहीं लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? मेरे को डर लग रहा है इसलिए। डर लगता है? हाँ। किस बात का? ते आजारी होऊन जातं म्हणून, आप थंडी ताप येतं म्हणून। समझा देंगे उनको कि क्या फ़ायदा क्या है वैक्सीन लेने का? ओके, काय ना ताई, वॅक्सिन घेतल्याने तुम्हाला एक तर तुमच्या आरोग्यास काहीच त्याचं होत नाही। जर तुम्हाला वाटतं की आपण असं मला वाटतं की आजारी होतं माणूस। हा होतं, आता काय गोळी असते एखादी, तिने थोडंसं कधी कधी गोळी विना जेवणाची घेतली तर ती लागते, पण त्रास होतो तर गोळी शेवटी ती थोडाफार त्रास होतो, नॉर्मल ताप येतो किंवा मग थोडा अशक्तपणा जाणवतो, पण नंतर व्यवस्थित होतं। And we are determined to convince her by talking and urging her. Another avoidable death has to be stopped. अभी आप क्या लेंगे? चलेगा, ले लेंगे? हाँ, कब लेंगे? उद्या घेऊन टाकल। कल? ओके, ठीक है। सर्दी खांसी भी हो तो भी ये हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे, और उसमें में लस लेना इनके लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है भरोसा कर पाना। लेकिन क्या हम जैसे अगर कोई आए, इनको समझाए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए, हमने खुद लिए इस तरह से कुछ कर पाए, तो ये हम पे भरोसा रखते हैं। मतलब इनको कोई श्योरिटी देने वाला हो तो ये हम पे भरोसा कर लेते हैं। The next morning it's Adivasi Divas, or the International Day of the world's indigenous people. We chose this day to honor their trust in Sanjeevani. Members of both families are taken by bus to the nearest vaccination center to ensure they get their shot of life. Very often we have seen that beneficiaries are willing to get vaccinated, but they drop off because they find it too expensive to hire vehicles and come to vaccination centers. And that's exactly where the Sanjeevani campaign comes in, with this bus service, where we take the responsibility of transporting or ferrying them from their villages to vaccination centers at no cost. At the primary health center, beneficiaries maintain physical distance as they wait for their turn. And then, a surprise. A rapid antigen test is done on every person who is willing to get vaccinated, something never observed anywhere else. लोगों के मन में रहता है कि मैंने वैक्सीन लिया और बाद में मेरा कंडीशन ऐसा होगा और मैं पॉजिटिव हो गया, मैं सीरियस हो गया। ये भी जो उनका गैर समझ रहता है वो दूर करने के लिए हम एंटीजन टेस्ट का ज़रूर हेल्प लेते हैं, और उससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। The negative results did clear all doubts of both the beneficiaries and the doctors. They are then registered on the CoWIN portal. एंटीजन केली का? हो, बरं।
And then one by one, they all get vaccinated. Sunita, Navnath and his wife, and Devki. All of them are protected by a COVID vaccine at this drive organized by the Sanjeevani campaign. आम्ही संजीवनी बसमधून येथे आलेलो आहे लस घ्यायला. पहिल्यांदाच घेतोय आम्ही ही लस. आम्हाला ही लस घेतलेली आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. माझे पती गमावले, ते स्वर्गात गेले. त्यांना पण खूप आनंद होईल व लस घेतलेली आम्ही. कोविडची लस मी पहिल्यांदाच घेतली. इंजेक्शन मला घ्यायचं नव्हतं, भीती वाटली, पण संजीवनी बसमधून मी आली. त्यांनी सगळ्यांनी समजून सांगितलं चांगलं आहे ते घेऊन टाक, काही त्रास होत नाही. मी घेतलं आहे. माझं मिस्टर कोरोनाने जरा वारले आता, त्यामुळे मी इंजेक्शन घेतलं आहे. Each is then given paracetamol in case they get a high fever. And importantly, they are all explained by doctors on the post-vaccination protocol. लोगों की अफवाहें थी कि ये वैक्सीन लेने के बाद 1.5 साल के बाद डेथ हो जाती है, और ऐसा सुना था मैंने, तो इसके लिए आज तक नहीं लिया था. अभी जबकि मेरे डाउट क्लियर हो गए, सो अभी वैक्सीन लिया मैंने और ये सेफ़ है. हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, कोई लोग गुजर गए हैं, लेकिन ये डोज लेना ज़रूरी है, टीका करना ज़रूरी है. यानी मैंने संजीवनी वजह से ये डोज लिया है, कोरोना से आदमी बच सकते हैं. While the vaccines are given by the state government, the special vaccination drive is organized by the Sanjeevani campaign. Our social workers first changed the minds of those who were vaccine hesitant. Then they registered and mobilized those keen to get the jab, and finally transported them to the vaccination center. संजीवनी के इतने अच्छे प्रोग्राम के कारण हमारे यहाँ आके उन्होंने सब लोगों को बताया कि नहीं, हम संजीवनी ने उनका जो भ्रम था वो निकाला, और उसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई और इधर सब लसीकरण बहुत अच्छी तरह हो गया. तो संजीवनी जो कैंपेन है उसके सब साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुर्गम एरिया में और जहाँ पे लाइट का, पानी का और रास्ते का सब प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है, वहाँ तक आके उन्होंने जो हेल्प करने की कोशिश की और अच्छी तरह മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു എക്കാലവും. ഷീൻ മാക്സ് ബൈ HD പെയിന്റ്സ്, വാല്യൂസ് ബിയോണ്ട് കളേഴ്സ്. രോഗപ്രതിരോധത്തിനും തൊണ്ട സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അരോഗ ഹെർബൽ ഡ്രിങ്ക്. യഥാർത്ഥ ഡിജിറ്റൽ Asha workers are out on duty in the remote village of Thanapada, close to the border of Gujarat. The health workers are traversing forests, crossing streams, and walking several kilometers to reach patients, especially those who are infected by COVID-19. दादा, हो दादा, हाँ ढोकले की काय? होता है, आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय. Sangeeta Bhoye is an Asha supervisor with a team of 12 Asha workers, and her work on the ground is admired and excellent. Not just providing medical attention but also giving food, provisions, eggs and vegetables to coronavirus patients. आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते. आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली. And going beyond the call of duty makes her a Sanjeevani champion. She purchased the rations from her salary of just 8,000 rupees, of which 2,000 rupees she says she would spend on COVID-19 patients.
जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी, उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। Sangeeta recalls how tough it was when the pandemic started in January 2020. Information was already sketchy, and with poor mobile connectivity, it became even more challenging. कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। Sangeeta and her team of Asha workers are the government's frontline health workers in villages. They are responsible for a population of nearly 11,000 people, largely uneducated Adivasis. With hardly any awareness, stigma spread fast in the region. हमारे घर में तो बोले तो लोगों को कोरोना का बहुत ही डर था, इसलिए हमारे घर के लोग भी, हम जब सर्वे को जाते थे उसके बाद आने के बाद बोलते थे आप बाहर चलो हो, बोले तो खाना अलग से देने का, अलग से रहने का, कोई नज़दीक नहीं आने का, जल्दी से वो काम कर रही है तो कोविड पेशेंट के साथ उनके घर पर जा रही है, ऐसे सब घर में था हमारे। But they all continued working, serving the people, and for that they are our Sanjeevani champions. But Sangeeta's team also suffered a loss. 32-year-old Renuka Gotarne is an Asha worker for over a decade. Sweet-natured and soft-spoken, but COVID-19 snatched away the person she was closest to, her 48-year-old mother, Jijabai. In February, both her parents tested positive for coronavirus. She suspects that they caught the virus when they went to a Nasik hospital for Jijabai's kidney stone treatment. Both husband and wife did recover from the infectious disease, but Jijabai, who had high blood pressure and diabetes, died after 2 months. She had been compromised because she was not vaccinated. टीका नहीं उसने करवाया, वो बोली कि टीका करवाने के बाद डेड हो जाते हैं, ऐसे वो घबराती थी टीका कराने के लिए कि जो आदमी पहले से बीमार है उसने टीका नहीं लेना चाहिए था, इसलिए। It wasn't the case that Jijabai did not have enough information. Her daughter, an Asha worker, had counselled her many times, begging her to get vaccinated. But fear had overwhelmed her. मैंने उसे बोला था कि मैंने भी 2 वैक्सीन ले, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं हो जाएगा। तो बोले कि मुझे बीपी शुगर है, मुझे हो जाएगा ऐसा, इसलिए उसने वैक्सीन नहीं लिया था। मला जायचं होतं लस घ्यायला, मला तिने जाऊन नाही दिलं का तू नको जाऊ, कारण कसं म्हणजे लोकांचं ऐकायला मिळतं ना, लस घेतल्यावर असं होतंय बघा, मग तिने मला सुद्धा नाही जाऊन दिलं, आजपर्यंत नाही गेलो मी। Jijabai now no more, but it's those living who survive with the guilt. अब सोचते हैं कि हम माँ को नहीं बचा पाए तो लोगों का क्या बोलेंगे, इस वजह से मैं 1 महीना काम पे गई नहीं। ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आशा वर्कर ने उनके माँ को बहुत समझाया था कि वैक्सीन ले ले, वैक्सीन के जो फ़ायदे हैं वो भी समझाए थे, और आशा वर्कर खुद को ऐसे मानते हैं कि उनके वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि वो समझाने में थोड़ा सफल रही है, लेकिन ये सब जो घटना हुई है वो लसीकरण, वो वैक्सीन न लेने के कारण ही हुई है सर। अगर ये 2 डोज अगर ले लेते तो ऐसी घटना टल सकती थी। जो हमारे घर में हुआ बाकी और घर के लोगों को नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। जो लोग वैक्सीन जिन्होंने लिया नहीं, वो हमारी कृपा है कि वो वैक्सीन ज़रूर ले। It's a sight that would send shivers down a health worker's spine. At a bank in Thanapada, massive crowds surround the building. No masks, no social distancing. It's almost as if people believe the pandemic is over. तुम्ही मास्क काय नाही घातला? मास्क आहे ना, आहे ना मास्क. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? मला करोना गेले काय? तुम्ही मास्क काय नाही घातला? नाही ना आणलं. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? घरीच. आणि तुमचा मास्क कुठे आहे? मास्क कुठे आहे? तुमचा मास्क कुठे आहे? करोना गेले काय? करोना गेले? संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत
कोरोना लसीकरण जाणीव जागृती विषयक फिल्म दाखवली जाणार आहे. And that's exactly why Sanjeevani persists with awareness drives, to remind people that the second wave took many, many lives. And India could soon be at the doorstep of a third wave. And street plays come in handy as they are easy to understand. हो घाबरतात म्हणतात आम्हाला आजार होईल, आम्ही दगावू पुढे, त्याच्यामुळे लस घेत नाहीत लोक. पण आम्ही खूप सांगतो ना लस घ्या, काही लोक घाबरतात. ते बऱ्यापैकी लसीकरण झालेलं आहे आमच्या इथे 2-4 वेळेस झालेलं आहे. And to further convey our message, the Sanjeevani anthem in Marathi. लोगों को तो डरना तो नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन की तो ज़रूरत है अभी, लेकिन हमारा जो ट्राइबल आदिवासी एरियाज हमारे यहाँ के लोग वो क्या बोलते हैं, वो साक्षर नहीं है. इधर लोग डरते, तो अभी आपने ये जो